चलिए, so let us start with our next question. What is the difference between limitation and prescription? अब इस तरीके के क्वेश्चन में, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप ऑफ कितने मार्क्स के लिए आपसे ये पूछा गया है. ठीक है. सो फॉर दिस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन भी दी है, सो दैट आपको पता हो दैट इफ सच क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नंबर के लिए आए तो आप उसमें छोटी सी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऐड कर दो. ठीक है. चलिए, इसमें लिखना शुरू करिए. इंट्रोडक्शन में अगेन ये कोट है. लिमिटेशन शट्स द डोर्स ऑफ द कोर्ट and prescription alters the very ownership of the house. So एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है. देन अगेन लाइन ड्रॉ करिए. बेसिस में पहले लिखिए यहाँ पे लिमिटेशन, एंड प्रिस्क्रिप्शन. मीनिंग में लिखना शुरू करो. लिमिटेशन के अंडर नंबर 1, it is a period for instituting proceedings against the other person, full stop. The determination bars the remedy to enforce a right, full stop. Prescription में लिखिए, it extinguishes an existing right, or creates a new right by lapse of time. तो इसमें मतलब क्या हुआ, मेरा राइट खत्म हो जाता है बट आपका राइट क्रिएट भी तो हो जाता है. सो दैट इज हाउ द प्रिस्क्रिप्शन वर्क्स. नेक्स्ट में लिखिए इफेक्ट ऑन राइट. इसमें लिखो राइट सबसिस्ट बट रेमेडी इज लॉस्ट. प्रिस्क्रिप्शन में लिखो राइट इटसेल्फ इज एक्सटिंग्विश्ड. right itself is extinguished. स्कोप में लिखिए प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्शन में लिखो सब्सटैंटिव. ब्रैकेट में फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख लो क्रिएट्स लीगल राइट्स. नेचर में लिखो लिमिटेशन में लिखो नेगेटिव in nature, that is it takes away the remedy. प्रिस्क्रिप्शन में लिखो both positive and negative in nature, as it may create new right / extinguish the old one. गवर्निंग लॉ, किस लॉ से इसको रूल किया जाता है. इसमें लिखो गवर्न्ड बाय लिमिटेशन एक्ट में लिखो गवर्न्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963. प्रिस्क्रिप्शन में लिखो गवर्न्ड बाय सेक्शन 25 से लेके 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट
and Indian Easements Act 1882 and यहाँ लिखती हूँ the Indian Easements Act 1882 ठीक है, आप इसकी कंक्लूजन लिखिए. इन एशियंट इंडिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको जरूर लिखिएगा whenever this question comes. In ancient India, there was only a law of prescription. There was only a law of prescription and no law of limitation as such. And no law of limitation as such. Full stop. For the acquisition of title by prescription, for the acquisition of title by prescription, comma, a period of 20 years a period of 20 years was laid down by certain smriti writers, comma, though others differed regarding the length of period. ठीक है, so ये है आपका डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन. अगर आपके ये वैसे जनरली आएंगे भी ना तो दे कम फॉर 5-5 का नंबर, ठीक है, पार्ट्स में आते हैं. बट इवन इफ दे कम फॉर 10 मार्कर, 20 में तो नहीं आएंगे. इवन इफ दे कम फॉर 10 मार्कर, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दो, कंक्लूजन ऐड कर दो एंड इनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो. सो आपका 10 मार्कर विल बी सॉर्टेड. Next is, what is the difference between limitation and latches? Latches, lashes, जिस तरीके से भी आप pronounce करें. तो again लाइन मार के लिखिए. बेसिस है, limitation and lashes. इसमें लिखो नंबर 1 इसकी नेचर. लिमिटेशन में लिखो स्टैट्यूटरी रूल अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963. लैचेस में लिखो इक्विटेबल प्रिंसिपल इवॉल्व्ड बाय कोर्ट्स. देन इज टाइम पीरियड लिखो, इसमें लिखो runs by fixed statutory time periods, runs by fixed statutory time period provided under the schedule. And latches में लिखो based on unreasonable delay and the prejudice caused thereby. ऑपरेशन में लिखो लिमिटेशन के अंडर कि इसका इफेक्ट क्या है. बार्स लीगल रेमेडी after the expiry, comma, but the right may survive. Latches में लिखो
Bards equitable relief like specific performance, injunctions, etc. Next लिखो applicability. It applies to civil suits. It applies to civil suits, appeals, applications, comma arbitration. Latches में लिखो applies in equitable jurisdiction. Flexibility में लिखो limitation के अंदर rigid with limited exceptions. Latches में लिखो flexible comma depends on facts, conduct and fairness. Facts, conduct and fairness. ठीक है, मैं इसमें आपको कंक्लूजन के लिए आई कैन गिव यू अ केस लॉ, तो आप वो लिख सकते हैं, आपको याद रहता है तो, अगर जरूरत है तो. बट अगेन आप लिमिटेशन के केस में तो वो राजेंद्र सिंह वाला केस लिख लीजिए. एंड इन केस ऑफ लैचेस राइट डाउन स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नंदलाल Jaiswal. This is of 1986. इसमें लिखो writ can be rejected on the basis of laches. ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन में दो केसेस लिख सकते हैं, राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह और स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नंदलाल जायसवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between limitation and acquiescence? Again basis लिखे, line, limitation, and acquiescence. इसमें लिखना शुरू करो. मीनिंग में लिखो statutory bar on legal remedy after the expiry of prescribed period under the Limitation Act. Under the Limitation Act 1963. Acquiescence में लिखो voluntarily acceptance or assent, acceptance या assent to a wrongful act by not objecting, comma, thereby losing the right to challenge it later. Source governed by the Limitation Act 1963. And acquiescence में लिखो based on equitable principle और डैश करके लिखो he who sleeps over his right, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस वाला आप वो मैक्सिम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपलिसिटर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं he who sleeps on his right loses them.
नेचर में लिखो इट इज प्रोसीजरल, लिमिटेशन एक्ट में प्रोसीजरल इन नेचर। एक्विसेंस में लिखो सब्सटैंटिव प्रिंसिपल, सब्सटैंटिव प्रिंसिपल। इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी में लिखो रेमेडी इज बार्ड, remedy is barred, but the right subsists, but the right subsists। and acquiescence में लिखो right itself is lost, right itself is lost because inaction, inaction is that is no, taking no action, inaction is treated as inaction is treated as implied consent। Next is need for knowledge, starts from the accrual of cause of action irrespective of actual knowledge। फुल स्टॉप। और एक्विसेंस में लिखो requires knowledge of one's right and voluntary action inaction। कंक्लूजन लिखो इसकी। अब कंक्लूजन क्यों लिखवा रही हूं, बिकॉज लैचेस और एक्विसेंस में फर्क क्या है फिर अगर हम पॉइंटर्स देखें तो इसमें लिखो latches is merely passive, latches is merely passive while acquiescence implies consent। latches is when you have not taken care of any, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक्विसेंस बेसिकली मीन्स कि आपने हाँ बोल दिया है, ठीक है, दैट यू कंसेंटेड टू इट। तो ये आपने ध्यान रखना है। Latches is merely passive while acquiescence implies active consent, full stop। Mere delay is not itself fatal to the suit, but delay which amounts to waiver of the plaintiff's right by acquiescence may be sufficient to disqualify a plaintiff from asserting rights which are not actually barred by limitation, तो अगर आप इसको अच्छे से इस लाइन की एक रीडिंग लेना, सो यू विल रियलाइज कि पूरा का पूरा क्रक्स है इस लाइन में, ठीक है। सो mere डिले इज नॉट फैटल। लिमिटेशन पीरियड के आखिरी दिन तक हमारे पास अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं या प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। बट अगर हमने एक्वासाइज कर दिया है देन इट इज अ बार, ठीक है, देन इट इज अ बार टू दी प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड एस्टॉपल।
limitation and estoppel. इसमें लिखो इसका मीनिंग लिखो सबसे पहले. Law that prescribes it is a law that prescribes a fixed time within which legal action must be initiated. Prescribes a fixed time within which legal action must be initiated. एस्टॉपल में लिखो a rule of equity prevents which prevents a person from denying or asserting contrary facts when his previous representation has led another to believe otherwise. ठीक है, मीनिंग हो गया. नेक्स्ट लिखो नेचर. लिमिटेशन एक्ट क्या है? इट इज प्रोसीजरल. एस्टॉपल में लिखो इट इज सब्सटैंटिव. प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव. सोर्स लिखो. It is governed by a source by the Limitation Act 1963. एस्टॉपल में लिखो it is based upon equity and 115 of the Evidence Act. Object to prevent stale claims, encourage diligence and ensure legal certainty. एस्टॉपल में लिखो to prevent injustice caused by inconsistent conduct or representations. Applicability applies to judicial proceedings for recovery or enforcement of rights. एस्टॉपल में लिखो applies where one party has relied on the representation or conduct of another party. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें लिखो लिमिटेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्लेंटिफ. comma does not apply in a matter of defense. एस्टॉपल में लिखिए it is applicable on either party. Effect लिमिटेशन में लिखिए bars
bars the remedy if action is not brought within prescribed time. और estoppel में लिखिए precludes a party from going back on his word or representation. Waiver. Limitation cannot be waived by the parties. estoppel में लिखिए it can be waived if the party chooses not to plead it. if the party chooses not to plead it. ठीक है, अगर आपको याद हो हमारा estoppel का लैंडमार्क केस है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, तो आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट दिस इज द लैंडमार्क केस लॉ जहां से estoppel का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था. एंड यस, दोनों ही एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स हैं वो फेयरनेस को प्रमोट करते हैं. Next question for today is limitation applies only to institution of proceedings, not to their continuance. So ये आपका for 5 marks सवाल है. Ideally एक पेज का होना चाहिए. इसमें लिखो अगेन लाइक आई सेड ये सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है, तो इनकी इंट्रोडक्शन इनकी कंक्लूजन इट कैन बी ओवरलैपिंग. आप एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन प्रॉपर प्रिपेयर करके रख लो जो आप इस तरीके के आंसर्स में अपना मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट दैट हर एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा. ठीक है जी, तो इसमें पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखो इंट्रोडक्शन में. द लॉ ऑफ लिमिटेशन under the Limitation Act 1963 fixes the maximum time within which legal proceedings may be initiated. Its object is to prevent stale claims and encourage diligence. However, it is important to note that Act regulates only the initiation of the proceedings and not their continuance or completion once validly instituted. ठीक है, तो ये हमने लिंक कर दिया. नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग टू द बॉडी. इसमें लिखो Section 3 of the Act makes it mandatory for the courts to dismiss any suit, appeal or application filed beyond the prescribed period, even if limitation has not been pleaded as a defense. Full stop. Once the proceedings are instituted within the prescribed time,
once the proceedings are instituted within the prescribed time, comma, the Limitation Act does not interfere. The Limitation Act does not interfere with how long the case continues or how it is decided. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो the act does not fix time limit for continuance of judicial proceedings, comma, it is only concerned with the date of institution. इसमें आप यहाँ पर एक केस लॉ लिखिए. Sudarshan Panda and others versus Lakshmidhar Panda and others. This is a 1983 ओडिशा हाई कोर्ट की जजमेंट. इसमें लिखो an application for a final decree in a suit for partition is not governed by any provisions of the Limitation Act. ठीक है, अब इसमें आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में. However, certain exceptions are provided in the form of continuing wrongs under section 22 which give rise to fresh cause of action each day, full stop. In such cases, limitation does not merely attach to the institution but extends as long as the wrong continues. अब आ जाओ इसकी कंक्लूजन पे. सम अप करते हैं 2 लाइनों में. The Limitation Act applies only to the initiation of legal proceedings, full stop. The rationale behind this rule is that a diligent party should not be prejudiced by judicial delays. ठीक है, बस इसमें इतना ही लिखने की जरूरत है. सो दिस इज फॉर योर 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटेशन एक्ट नीदर क्रिएट्स नॉर एक्सटिंग्विशेस राइट्स but only prescribes the time for their enforcement.
critically analyze with judicial support. तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ओवरलैपिंग सा ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बट द फोकस इज कि ये इट इज मोर प्रोसीजरल इन एस्पेक्ट, ठीक है। बता हमने यहाँ पे भी है कि स्टार्ट करने के ऊपर अप्लाई हो रहा है, चलता जितनी मर्जी देर तक रहे, वी आर नॉट बॉदर्ड। यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि आपका लिमिटेशन एक्ट से ना ही कोई राइट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है। हम तो सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि इस टाइम के अंदर अंदर आप जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर लो, ठीक है। तो लाइक आई सेड अगेन थोड़ा सा ये पार्ट ओवरलैपिंग है, बट हमने इसका अलग आंसर ड्राफ्ट किया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू राइट। अगेन इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो काफी टाइम से हमारा ऑब्जेक्ट वाली इंट्रोडक्शन ही चल रही है, बट हमने उसको भी अलग अलग तरीके से लिखा है। एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द प्रिंसिपल दैट इज ऑफ रिटन अंडर सेक्शन 3 एंड उसकी एक्सेप्शन। सेक्शन 3 का जनरल प्रिंसिपल क्या है, दैट आपका ओनली द रेमेडी कम्स टू एन एंड बट द राइट स्टिल सर्वाइव्स। बट इसकी एक एक्सेप्शन है दैट इज सेक्शन 27 जो कि कहता है कि राइट और रेमेडी दोनों खत्म। देन दीज आर द इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो इस प्रिंसिपल के साथ, इस रूल के साथ डील करता है। एंड देन इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने सम अप कर दिया, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट राइटिंग। The Limitation Act of 1963, the Limitation Act of 1963 is a procedural law, that regulates the time within which legal remedies must be pursued. Full stop. Its primary object is not to create rights or take away substantive rights, but to ensure that the claims are made within a reasonable period. Full stop. अब हम आ रहे हैं अपना जनरल प्रिंसिपल पे। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, limitation affects the remedy. Limitation affects the remedy and not the right. Full stop. If a suit is barred by limitation, comma, the court cannot enforce the remedy, comma, but the underlying right may continue to exist morally or naturally. Full stop. नेक्स्ट में आ जाओ एक्सेप्शन। इसमें लिखो बट सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट serves as an exception to this rule and provides that upon the expiry of limitation, for recovery of possession of property,
The owner's right to such property, the owner's right to such property itself is extinguished. Full stop. Thus, unlike most provisions मतलब ये बाकी provisions की तरह नहीं है. Thus, unlike most provisions, this section destroys the right itself, not merely the remedy. Not merely the remedy. केस का नाम लिखो. बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें लिखो हेल्ड limitation does not create or extinguish rights except as expressly provided under section 27. Except as expressly provided और ब्रैकेट में section 27. नेक्स्ट केस लिखो खत्री होम्स वर्सेस यूनिवर्सिटी 2011 सुप्रीम कोर्ट. इसमें लिखो this case reaffirmed that limitation law is founded on public policy to prevent stale claims, comma, not to determine substantive rights. अब आते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे. इसमें लिखो this act is largely procedural, comma, however section 27 represents a substantive exception comma, as it extinguishes ownership rights if property is not reclaimed within limitation. एंड लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं लिमिटेशन बार्स द डोर्स ऑफ द कोर्ट, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, except in cases under section 27 where the right itself perishes. ठीक है जी. सो हमने स्टार्ट किससे किया था कि बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट राइट से तो डील करता ही नहीं है, वो सिर्फ रेमेडी से डील करता है मेजरली, और वो बोलता है कि विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आप केस कर लो, नहीं तो आपकी रेमेडी खत्म हो जाएगी बट राइट विल स्टिल सबसिस्ट. बट इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 27 में दे रखी है, और 27 वाली एक्सेप्शन क्या कहती है दैट अगर आपने विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम नहीं करी तो देन द राइट एज वेल एज द रेमेडी इज गोइंग टू कम टू एन एंड. ठीक है. फिर उससे रिलेटेड हमने 2 केस लॉज देख लिए एंड देन हमने एक कंक्लूजन भी देख लिया कि जनरली तो इट इज ऑफ प्रोसीजरल नेचर बट एक एस्पेक्ट है इसका विच इज ऑफ सब्सटैंटिव नेचर एंड उसका इफेक्ट ये है. सो ये भी आपका इट इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. ऑल्दो आई थिंक 10 मार्क्स के लिए भी आपका ये सफिशिएंट मटेरियल बन गया होगा. सो
यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल से हम सेक्शन 3 वाले 4, 5, 6 ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, द सेक्शंस वाला पार्ट। मेजरली आपके ये हो गए हैं, बारिंग वन और फ्यू क्वेश्चंस जो हम अगेन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट पे है, किस स्टेज पे आप रेज कर सकते हैं, एपिलेट स्टेज पे क्या फर्स्ट टाइम रेज किया जा सकता है। सो ये वाला एक क्वेश्चन है विच इज स्टिल देयर इन रिलेशन टू द इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम अपना जो अदर पार्ट है सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स वो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इफ एनीबडी हैज़ एनी डाउट, आप यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, एंड ऑल्सो दिस इज अ रिमाइंडर दैट आप लोग का थर्सडे को डीएनएस का प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस का टेस्ट है। सो प्लीज बी प्रिपेयर। 11 बजे आपको थर्सडे को टेस्ट मिलेगा, राइट। टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी सेम जो हमारे संडे वाले ही होते हैं, ठीक है जी। चलिए जी।